So, to a lot of people who are new to building services practices, they're generally unfamiliar with the budgetary allocations for the services that Allied offers. So, अगर आप एक एवरेज कंपनी से पूछें कि आप एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस वगैरह जो एलाइड की 7 सर्विसेज हैं इनके ऊपर आप कितना खर्चते हैं, you start to get different answers. But by analyzing those, you start to build a general band जिसके अंदर ये आपकी कॉस्ट का स्ट्रक्चर रहता है. So we did a little survey to help explain that. So the first thing we did, I guess everybody nowadays does, is you ask Bart कि एक एवरेज कंपनी जो है आईटी सर्विसेज की वो कितने पैसे खर्चती है ऑन नॉन आईटी नॉन सेल्स स्टाफ. सो स्पेसिफिकली यहाँ पे जो सवाल पूछा गया वो ये है कि अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आईटी सर्विसेज की कंपनियाँ, मिड साइज्ड आईटी सर्विसेज की कंपनियाँ कितना खर्चती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए. सो उसने कुछ रेंजेस दी हैं जिनमें मिनिमम जो एंड है ऑफ द रेंजेस वो ये है कि मार्केटिंग पे 15% खर्चती है, एडमिनिस्ट्रेशन पे 5%, ट्रेनिंग पे 2% एंड सो ऑन. सो अगर आप इनको टैली अप भी करें, एट द वेरी लीस्ट इट्स अराउंड 22%, और इसका जो हायर एंड है आई थिंक इट्स लाइक 30% अगर आप छोटे हैं तो यू विल बी लेस एफिशिएंट, अगर आप बड़े हैं तो यू विल बी मोर एफिशिएंट. एलाइड का जो अपना बजट है इट्स एक्सप्लेन्ड इन अ डिफरेंट वीडियो. वहाँ पे अगर हम टोटली ऑटोनोमस डिपार्टमेंट्स को देखें तो एनीवेयर बिटवीन 50 एंड 25% उसकी कॉस्ट आई है year on year for the last many years really, but the numbers explained are in the 22-23 audit. So हमारा अपना डेटा भी 20% की रेंज को कंफर्म करता. पाकिस्तान में कुछ मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स हैं जो कि बिल्कुल हमारी जैसी कंपनियों के साथ काम करती हैं, उनके प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज़ करती हैं, उनको बेहतर एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती हैं, उनकी बजटरी एलोकेशंस को रिव्यू करती हैं. सो वहाँ से भी हमने ये डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की है. वो भी यही हमें बता रहे हैं कि अराउंड 20%. माजिद नाम है उनका, उनका नीचे रेफरेंस भी दिया हुआ है. एक डेटा पॉइंट हमें मिला है फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड GoSAS. नाउ GoSAS इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इट्स अ कंपनी जो जिसका यूएस प्रेजेंस बहुत हैवी है versus a lot of the offshore companies, which means they bill in US rates and they all their offshore offices are just cost heads, opcos जिसको बोलते हैं. तो उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि उनका बेस नंबर तकरीबन 15% के करीब है. Now if you're billing at $150 an hour average, obviously offshore costs जो हैं वो as a percentage काफ़ी कम हो जाती हैं. So if they were a purely offshore company, I think it would be upwards of 20%. इसी तरह ये आगे 2-3 कंपनियां हैश लॉजिक, ई स्पार्क्स, कोडिंग पिक्सल, ये वही 15 से 20% की रेंज में है. ई स्पार्क्स इज द ओनली एक्सेप्शन एंड आई थिंक देयर numbers are a bit lower because they're going through a drastic downsizing. One common question is why are we not mentioning the specific costs and why are we doing this in percentages? And I think the best answer to that is कि जब भी दो कंपनियों को आपस में कंपेयर किया जाता है तो बहुत सारे वेरिएबल्स उनको डिफरेंशिएट करते हैं. And unless you normalize things as percentage of people per capita या percentage of revenue, you can't make sense, you can't compare one company to the other. So units को normalize करना बहुत ज़रूरी होता है. इसलिए जनरली परसेंटेजेस में ही डिस्कशंस होती हैं और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है मैनेजमेंट कंसल्टिंग में. बेंचमार्क्स, इंडस्ट्री के बेंचमार्क्स जनरली परसेंटेजेस ऑफ रेवेन्यू में ही कंपेयर किए जाते हैं एक कंपनी के दूसरे के साथ. Some people still find these numbers difficult to digest. They feel like they can do better if they were doing it on their own. No harm in that.
no harm in trying. I think people waste a lot of time and energy coming to these conclusions, but some people just prefer to do it that way. Um, when you're making a projection on how much it would cost you if you were doing it yourself, make sure that you've watched the other video on the true cost of services, because that helps explain some of the common problems जो लोग ignore करते हैं when making these projections. So things like not including the value of their own time and not including the cost of management or the cost of failure, etc. So the other important thing to note in these numbers is कि ये वो numbers हैं जब एक कंपनी ने अपने इन डिपार्टमेंट्स को एक कॉस्ट सेंटर की तरह देखा है, यानी कि वो टोटली सब्जुगेटेड हैं, वो मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट के ऊपर रख के उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं. हमारे केस में, एलाइड के केस में, इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट इन दैट वी डू ग्रांट our core services teams to have the right to entrepreneurship. So जो बंदा हमारी HR की प्रैक्टिस चला रहा है, जो फाइनेंस की प्रैक्टिस चला रहा है, हम ये कहते हैं कि तुम भी एक entrepreneur बन सको बाकी सब लोगों की तरह, तो हम तुम्हें वो फाइनेंशियल स्पेस भी देंगे. दिस इज़ नॉट द वे मोस्ट कंपनीज आर, इन दैट उनकी कोर सर्विसेज जो हैं वो सिर्फ उनकी खिदमत के लिए होती हैं और ये प्रिविलेज उनको ग्रांट नहीं किया जाता. सो बिकॉज हमारे कोर वैल्यूज़ के अंदर ये इनेबलमेंट शामिल है, तो हम उसको एक्सटेंड करते हैं इवन टू आवर कोर सर्विसेज, विच मीन्स कि ये जो नंबर्स हैं 15 से 20% के दरमियान जो इंडस्ट्री बेंचमार्क्स दिखा रहे हैं, आर कॉस्ट्स are slightly upwards of this because we need to create that financial space to be able to enable these people as